So, first of all, welcome to the talk show by GDG Gwalior. I'm your today's host for the podcast. My name is Ankit Jadhav, and I'm also a volunteer of GDG community. GDG Gwalior has started this amazing series of podcasts, and in this series, this is going to be our first podcast. So stay tuned with us. This podcast is going to be awesome, as our guest speaker will share his journey of creating his own startup and some success mantras of life with us. First of all, let me know how many of you know what GDG Gwalior is all about. Well, if you don't know, let me give you a quick summary of that. GDG is basically Google Developer Group. In this community, we organize events to introduce new technologies that are industry relevant. The GDG community provides an exclusive environment where everyone and anyone interested in tech, from beginner, developer to experience, can learn a lot. So yeah, that's all about GDG. Let me introduce our today's guest, Mr. Gaurav Jain. He's a founder of Digimonk startup, an influential speaker, and a professional mentor. Sir, first of all, thank you so much to be here. We are cherished that you're here. Thank you. Same here. So, sir, would you like to throw some light upon your startup and your journey, how you have created Digimonk? Yeah, it's been a really fantastic and amazing journey so far. Really, I want to share some insights, like what was the reason, how we started this, and now where we are. Right. So basically, like whatever you do in your life, you always have some driving force, right? Let's say you are studying somewhere, you are playing some sports, learning something, you are going somewhere. So you always have some driving something behind yourself. That's always keeps you motivating to do the things on your own, right? And that's the basic idea. That's the basic thing that really driving force for me was the like I belongs to Gwalior, but due to this my job, like I got selected in the company like Techmakers after the college, and I have to move out of Gwalior, and I stayed there like for 8 to 10 years, 12 years, and the reason was like I have to come back to the Gwalior, right? And at that time, like back in like 6 years, no more opportunity in the Gwalior, so that I can like find a similar job in the Gwalior itself. So that was the major driving force for me to start a company here itself, so that the same problem I'm facing, I can provide the opportunity the people of Gwalior, the students of the Gwalior who don't want to move out of Gwalior because of so many reasons, like it could be their family reasons, it could be like personal, or some other reason they don't want to go out of Gwalior. But especially in the IT industry, like there is no such opportunity available in the Gwalior at that time. So that was the one of the reason I started this company, Digimonk, so that I can have like bread and butter for me, as well as we can create the employment in the for the IT software developments, and also the other people can also join here, and they can complete the job. That was the only reason to start this company. Yes, sir. Indeed, sir. Sir, like you have, like in your Digimonk, you have provided internships to students also, right? Yep. You have Definitely. provided internship to many students. I have heard this from my colleagues also when you have given that lecture in MITS. Oh, great, great. Yeah, definitely. Like time to time, whenever like the people, like especially in the engineering or MCA, they do require to have some industrial training or some like live project training, or like as part of the course, like graduation degree, or so they have to come to the internship, right? So we are providing them support, deliver to the client, right? What is the actual process of software development, how the QC happens, how the designers works, how the DevOps team works. So they definitely, the students from the different colleges like B Tech and MCAs, they come and they learn here. So yeah, so that was also another reason, like people, like when I was studying, I rarely get an opportunity to do internship in the IT or software development. People were just doing the into the BSNL, like for the electronics or some other industries, but there was no such companies who can give the internship in the IT industry or the software industry. Okay, sir. So, what are the skills that required
to find an internship and where we can find that internships? Like, it's a common question among students. How can we find internship? Like See, so throw some that. definitely. See, the one of the best possible other portals from nowadays where you can find the internship opportunities available. For us, like for the Digimonk, if you want to do the internship here, we are mainly into the software development, mobile application development. So the skills we always look for, like Tech development, Python, Django developers, or the React Native, the AWS developers, UI UX designers. So those are the skills primarily we are working upon. So if some student during their college degree, if they have some basic knowledge about these programming, so definitely they can apply via our website, like digimonk.in. They can go there. There's a like time to time we publish the internship opportunity available in the company, so they can go and apply there. And then so we call them up and we look for the like suitable window for them. Let's say there is a specific time when the college allow you to go for the like full time. Like you don't have to come to the college on regular basis for 30 days or 45 days. You can go and there. So they allow us. So we provide them an internship offer letter. From that, they get some NOC. They can come and start over here. Okay, sir. So, like, you have worked in HCL. So, like, how was your experience in HCL and what you have learned from that? It was really amazing, and I must say, like, I was fortunate to join as a software engineer in the HCL Technology as my first company. Honestly, like, I was not aware that I'm going to join as a software engineer there. Right, the moment I joined there and I got my first project, at that time I realized, oh, I become the software engineer now. I can really work on the Java project, the live project on Java. So that was like mesmerizing feeling at that time that I can't express. And yeah, so it was like I was like goosebumps were like, oh my god, I'm working on Java, that too in the company SCL, working for the international clients. So all those things was like that kind of exposure we don't get ideally when we are working on the colleges, right? Nowadays there are so many opportunity, virtual opportunity, like remote work, remote jobs are there, so you can directly connect to the internship clients and companies. But when we talk about the back in 2005 or 2006 when I joined the company, so there was no such opportunity. So yeah, it was a great experience. And then after joining there, just within 6 months of my joining into the SCL, I got an opportunity to work in the Sydney, Australia, directly for the client. It was a big client like Westpac Bank. So I fly over there, I stay over there around like 2 years, and then I directly work there. So it was a great learning, directly going to the client place, that too in the outside of India. That's the first international visit. And yeah, so I got a lot many exposure in terms of technical, my professional growth, and my networking. Everything was really great. Awesome. Apart from technical skills, sir, nowadays what are the skills that required for a student to be an engineer or be somewhere that he or she wants? The number one thing is, like, apart from technical, the core things, they must be always open and willing to learn new things. We understand the people coming from the college, they don't have that kind of exposure, they don't have that kind of hands-on, they don't have that kind of like faculty, so that they can get the actual, the real environment, what actually the companies work upon. So it's no harm, like even if you don't know, we hire the freshers, we know they don't have work in the something past, but they have a good learning attitude. Like no matter whatever is given to them, they are always open to learn the new technology, new things, new framework, new programming languages. So they should always be open to that. No matter if they are into the technical or non-technical, there are always certain things which you can always learn to grow yourself in the company, right? And the second important thing, especially in the like software development, they must be a good problem solver, right? It's no matter like if you're not good in the Django or you're not good in the programming language, but you having a good logical programming or logical thinking,
problem solving skills, right? So the coding and programming are the 20-30% part. The 70%, 80% involve how you think, how you react to the problems, right? How you understand the concept whenever the requirement is given. So if you are able to understand those things or not, right? Yeah. So what is the common myth about your job or field of expertise? Uh, there are a lot many, yeah, actually. See, the people always think like IT is open to everyone, right? If you can't do anything, then anyone can come and join the IT. I have seen many students who have done the engineering in the civil or the mechanical or the electrical. After 2-3 years, like if they are not getting a good job in the core, the core branch, so they try to move into the IT, right? Because this is a misconception that people always think like no matter like you just go and get some course for 1 month or 2 months course of the programming, and you can easily get into the IT industry. But that's actually not the case, right? In order to get into the software development, yes, it's a bit easy compared to the other industries. You can easily learn and get the job. But again, like as I mentioned in the previous question, you have to have good problem solving skills, right? Your logical thinking should be there. Then only you can master the art of the software development. Because it's not just writing about the coding or writing the syntax and you are done, you are the software developers, right? You have to think in a multiple aspects, right? Like if you think about the bigger system like a Facebook application or the Twitter or the Google, there are like thousands of engineers are working upon, right? So how you are like working on the small piece of code that might have impact to the other area of the software, other area of the application. So you have to have that kind of thinking, broader thinking. If I'm making some changes over here, or if problem is in that area, that might be connected to this piece of code as well, right? So that kind of thinking should have. So people are always like confused. Okay, they just learning the coding and they can do, and they always think, okay, now I'm the software engineer, I can do anything. Definitely, they can get, as long as they start the career. They just have some patience and they can definitely learn the things. They can grow even the IT. If they are coming from a different background, they can do. But they have to have some patience and learn the things as they go. And definitely they can excel their career in the IT also. So that's a misconception among the people that it's completely open for everyone and they just having a 1 month of course so they can get into the IT. Okay, sir. It's amazing, sir. Sir, I have one more question. What is your approach of hiring and onboarding, retaining employees? Like how you onboard employees and how you select? See, the number one is we look for the skills. Definitely, if you have gone through the certain programming language which we are primarily working upon, like as I mentioned, the Django or the Munstacks or the mobile application developments, right? Other than this, the person may or may not have the skills, but the important thing we look for the will. Even if you don't have a skills, but if you have a will to learn something, to work on something, definitely that's a right candidate for us. Sometimes you say, okay, yeah, Gaurav, like I don't know the Django, but I really want to learn. I have really passion about it. Like I can solve the puzzles. I have a good problem solving skills. I really love to, diagnose the things. So we have a certain kind of entrance test and like not a technical programming test, but some logical aptitude, reasoning test. If you think like you have that kind of mindset, you really love to solve the problems. So even we hire those kind of people, right? The skill, the syntax, the programming can be easily learned in just 4 to 6 weeks of program, right? But I can't teach you, like if you don't have a will to learn something, that no one can teach you to learn how you should be inspired to learn something, right? That will should come from your inside, right? So that's the important things we look for. Then positive attitude, obviously the positive attitude towards everything. Many times Now, I have today's generation is missing that positive attitude. Correct. Many students come here and they are always like, sir, aisa nahi hoga, we can't do this like this. Yeah, isme job nahi milti hai. Yeah, I have to go into the data science because usme bahut high salary ki jobs hain. So they are always like negativity, right?
they always think कि नहीं यार जो data science करेगा that's only getting the higher paid. बाकी जो छोटा मोटा programming कर रहे हैं they are good for nothing. So, but it's not like that. Like, yeah, your pay skills depends on the skills, your technologies, your core competency. But you should be positive enough to learn something, right? If you're getting chance, opportunity to learn something, you should be grabbing that, right? You can, आप अगर एक स्किल पे काम करो तो आपको उस फील्ड में for sure जॉब मिलेगी ही मिलेगी. और जॉब मिलेगी 100% is there. Definitely once you grab the job, एक जॉब आपने पकड़ लिया, slowly and gradually you can keep on changing. आप दूसरा कंपनी देखो या दूसरा उसी कंपनी में आप you can ask for the employer, sir, I have learned this additional skills, additional programming language. So can I get a chance to work on these technologies? और मुझे आगे like I have to work on the AI और ML पे काम करना है. Can I get that kind of projects? Right. So that's one important thing. We look for the hiring. Once the people are hired, the biggest challenge is to retain them. That's another challenge to like keep them for the longer time, right? So for that, we have we don't have a good MNCs over here. We don't have a big offices, but the good we have is our culture, right? Because of our culture, you will see the people are staying with us since we have started the company. Like our 80% employees are since then when we started the operations, right? The 5 years back. So the reason is the culture, because we always encourage people to, learn something new, try something new, and we don't scold them or we don't penalize them if they are doing something wrong. If let's say you are trying something new, but it didn't work, or because of it, something mishaps or something's not working. So we don't ask them, oh, why did you try that? No, we encourage them, no problem. Just go, learn more, and give it a try for the next project. No problem. Just give it a learn. So there's freedom, that kind of freedom we give to the people. Even the junior people, junior developers are also having that kind of leverage. They come by themselves and they can, ask, learn by themselves. And they say, okay, sir, I want to do this thing. I want to do that thing. We give them permit. Okay, go implement these new things. If that succeeds, it's good. If not, then also good. Try to improve that and implement again on the next project. So that's the two things. Like your company is having a very good culture, right? Absolutely. That's the only reason we could stay for this long and we have a team of this size, because people love to work over here, like what the Glassdoor says and other people says. There's no feedback. And recently we are going with the certification for the Great Place to Work. So we might be getting that certification, Great Place to Work. So that's definitely going to add, another feather on our cap. Okay. So what is your biggest failure and how did you learn from that experience? So, yeah, definitely, like whenever you are in any business or in your college life or anywhere, like you definitely come across the failures, right? जब मैं कॉलेज में था तब भी फेल हुआ था अपने टाइम पे एंड जब मैंने जॉब किया वहां पे भी कई सारे ऐसे आप फेल हुए होगे. हाँ, आपको देख के लगता नहीं आप फेल हुए होगे. नहीं, डेफिनेटली मैं मतलब क्या बताऊं, मतलब पता नहीं ऑन एयर जाएगा नहीं जाएगा ये क्वेश्चंस लेकिन हाँ, डेफिनेटली आई वाज फ्लंक इन द माय कॉलेज, राइट? मैं फेल हुआ था डेफिनेटली. फर्स्ट ईयर फेल हो गया था पूरा और इट वाज लाइक डिजास्टर फॉर मी, माय फैमिली, एवरीवन. इट वाज लाइक अ ट्रॉमा, क्योंकि मैं लाइक कभी टॉपर तो नहीं रहा था बट हमेशा अबव एवरेज वाला रहा था. ऑलवेज लाइक फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता था 60-70%. आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट. बट 12th पास करने के बाद आई टुक एडमिशन एंड आई गॉट फेल like completely. 4 subject out of 6 or 7 subject, in 4 subject I was failed, right? So that was a trauma for me. क्या ये क्या हो गया यार, एकदम से टॉपर स्टूडेंट तो नहीं था बट फिर भी इतना भी गया भी था नहीं था. So it was like then. So the reason was what I did is like I took an admission where I was not interested, right? What I did कि मेरे बाकी के फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं तो चलो यार इसी में एडमिशन ले लेते हैं यार, मेरा दोस्त जा रहा है तो वही सब ग्रुप किया, गुटबाजी किया और चलते हैं, राइट? सो बट वो अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि यही करना है अपने को, राइट? वो सिंपल एक करना है कि नहीं करना, अपने को लगा ठीक है कर लेते हैं. बट व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट योर नेचर, अगेंस्ट योर विल, तो फिर वो आपका मन नहीं लगेगा वहां पे. यू कैन नॉट गिव योर 100%, राइट? तो वही फेल हो गया वहां पे जाके. फिर घर वालों ने समझाया भाई जो मन है वो कर लो,
किसी को देख के नहीं करना, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, फ्रेंड्स का कोई प्रेशर नहीं है, व्हाटएवर यू वांट टू डू तब करो। देन आई सेड नहीं, मुझे कुछ कंप्यूटर में करना है, क्योंकि इट वाज लाइक अराउंड 2002 और 2001, दैट टाइम वाज द एरा ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स, जो है कंप्यूटर जो है लाइफ में आ रहे थे। तो उस समय जो बड़ा चार्मिंग सा था यार, बड़ा जैसे आजकल एआई और चैट जीपीटी का है ना बजिंग, सो सेम लाइक 20 years ago इट वाज लाइक विद द कंप्यूटर्स। तो वो मुझे लग रहा था कि नहीं यार कुछ कंप्यूटर्स में करना है यार, आजकल उसमें बड़ा एडवांस चीजें हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे जॉब्स हैं, कंप्यूटर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सो आई हैव टू डू समथिंग विद द कंप्यूटर। सो एट दैट टाइम आई लिसन टू माई हार्ट कि नहीं कंप्यूटर में जाना है, घर वालों को भी एग्री किया, एंड if I started with that, so that's the result of today, like where I'm sitting. So I'm having my own company. आज से 20 years ago ग्वालियर में कोई IT कंपनी नहीं थी, और आज देखो we are here. So if you listen to your heart, so you can just get, और ये तभी समझ में आता है जब when you get failed, जब आप किसी जब फेल होते हैं ना, जब फिर आप उसको एनालाइज करते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ, what went wrong, why didn't work, like so then you come out of like your आपका जो natural beauty है वो निकल के आता है, and then you establish something bigger, and that's the reason of like, so वही failure था मेरा। और उसके बाद फिर जो इससे निकल के आया, फिर उसका बिजनेस में भी काफी सारे failures आए when I started the business, so it was not a profitable from day one. It took around like 3.5 years to get profitable. Like 3 साल तक अपनी पॉकेट से सैलरी देना, rent, other expenses, like even I was not making profit, everyone was making the profit, like employee का salary, आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट का बिल, हार्ड कंप्यूटर्स का एक्सपेंसेस, एंड एवरी एक्सपेंसेस वाज देयर। आई वाज नॉट मेकिंग द मनी, सो बट या द गुड पार्ट वाज लर्निंग फ्रॉम द फेलियर्स। सो आई ऑलवेज कीप ऑन फिक्सिंग द थिंग्स। लगा कि यार यहाँ पे दिस इज गोइंग रॉन्ग, तो वो ठीक करना है। इफ दिस इज नॉट वर्किंग, हाउ टू रिप्लेस देम, हाउ टू चेंज द थिंग्स। सो आई कीप ऑन चेंजिंग द थिंग्स, एंड देन फाइनली फ्रॉम लॉस तो आई मेक इट प्रॉफिटेबल। So failures, it's your positive attitude, sir. हाँ right, वो कहूँगा कि मैंने right वहाँ पे कभी गिव अप नहीं किया। यूजुअली पीपल डू दिस मिस्टेक कि 2-4 महीने में लगता है कि यार प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या कोई भी स्टार्टअप्स आजकल करते हैं लोग, तो उनको लगता है कि यार 4-6 महीने हो गया, इफ वी आर नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ इट, सो वी शुड ड्रॉप द आइडिया, वी शुड गिव अप। सो वी शुड नॉट गिव अप, रादर देन वी शुड फाइंड द वे टू फिक्स अप द थिंग्स, राइट? कि अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, तो वी ट्राई टू लुक फॉर द सॉल्यूशन, राइट? कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, हाउ वी कैन फिक्स दैट प्रॉब्लम। उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली, राइट? हाँ, आपको कब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? जब आप अपने मन का काम नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट फॉलोइंग समवन एल्स, या किसी ने और ने कहा इसलिए करना, तो व्हेन यू विल नॉट गेट एनी सॉल्यूशन। बट व्हेन यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट, you are doing what you love, and you always find a way to resolve any kind of challenge, any kind of problem, or you can overcome anything. Yes. Thank you very much, sir. So, who has been your professional mentor? Like, आपकी लाइफ में वो कौन था जिसने आपको मेंटर किया? Mentor किया, like it keep on changing time to time. Like I was never had a single guru. ऐसा कभी नहीं रहा कि मैंने सिर्फ एक ही गुरु को बना लिया उनके करता, राइट? I was a kind of people like I always keep on learning from everyone, different people, right? अगर मैं मार्केट में भी जा रहा हूँ, कहीं होटल में खाना खा रहा हूँ, तो I find someone कि यार वो कैसे बात कर रहा है, उसने कैसा ड्रेसअप किया हुआ है, उसने क्या मतलब बातें, if he or she is like successful, so I follow him or her, right? कि वो कैसे करते हैं, उनकी क्या जर्नी रही थी. So I always keep on finding the new people and understand their life, right? What they have been doing in the past. तो ऐसा डायरेक्ट कोई मेंटोर या कोई डायरेक्ट कोई गुरु नहीं रहे. हाँ, there are always people who keep on motivating, right? जैसे कॉलेज टाइम पे एक टीचर थे मेरे, मतलब I must mention her, like her name was Deepti Gupta. She was like my class teacher. So at one point of time, like I was completely exhausted, यार मुझे कुछ नहीं करना है, IT वाईटी यार बर्बाद कहीं पैसा फील आ रहा था. She was there and she motivated me. नहीं Gaurav, you can do it. You have that mindset. You have that right attitude which is required for this industry. So she kept me, motivated. उन्होंने फैमिली से बात किया, अरे बच्चे थोड़ा सा like है ना, इसको मोटिवेट करो and इसको जाने दो, इसको एक्सपोजर लेने दो. Let him go outside of Gwalior. Let him learn something new, and he can definitely go do something. Like उसको ट्रस्ट करो थोड़ा सा,
So she was the one of the biggest mentor. Like that was a turning point in my life that I came out of that things. Then मैं campus में बैठा, फिर मेरा campus में selection भी हुआ, and then उसके बाद वो journey रही SCL, IBM and Wipro, US, Australia, फिर now company. So yeah, तो mentor ऐसा कोई fixed नहीं रहा, but हाँ, it always keep on changing. जब मैं companies में था तो वहाँ के managers को देखा, senior leaderships को देखा, वो leadership के जब उनके lectures होते थे, so I learned so many things from them, how they think, how they grow the business, how they solve the challenge, right? How they overcome any problem. So I keep on learning from so many different places, different people, different. It could be anyone, right? बच्चे से भी सीख सकते हैं, आप सोसाइटी में किसी सीनियर से भी सीख सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से. It could be anyone, right? So ऐसा कोई such mentor फिक्स नहीं है. I always open to learn from anyone. Even I can learn from you also. Thank you so much, sir. Well, आपसे अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है. So, sir, like if you could go back and give your 18 years old self one piece of advice, what would it be? It should be like education. Like मैंने थोड़ा सा अपने आप को at that time I didn't give too much importance on the education. I thought of कि यार कुछ नहीं होता पढ़ाई से, just a degree, it's a piece of paper, यार इससे कुछ नहीं होता. Like always like knowledge होना चाहिए, experience होना चाहिए, that's only works. That is true, but education also works. Right? There are some moment in your life like जब आप कुछ competition fight करेंगे या कहीं अच्छी जगह पे जाएंगे तो there is some some criteria, some bar where you have to above the bar, right? So if you have that kind of education level, or so maybe you are lacking behind. You have that all attitude, skills, everything, but maybe because of that education, you might not able to participate in some of the things, right? So I realized this thing. मतलब काफी टाइम बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, we should have a good education as well, right? From the good colleges. आपको सिर्फ don't do the degree or diploma for the sake of the name कि बस मुझे यार MBA का डिग्री मिल जाएगा, BTech का मिल जाएगा, right? That also will not work. Definitely you will get that paper degree, but if definitely you are associate with any of the good colleges, academics, so it really helps you a lot. क्योंकि आप जैसे सराउंडिंग में जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, you will get that, you develop that kind of attitude, right? If you are sitting with the IITians, you see the way they talk, the way they think, the way they have like a style, lifestyle. So definitely you learn or grab from there. So if you are not sitting with them, then definitely you are not going to grab them. So आपका सराउंडिंग में वो सब कैसे आएगा? That always you get from the education. If you are more educated, right, skilled, definitely you can you are above the other people, right? You are already ahead of the competition. गलती थी कि मैंने उस समय एजुकेशन को ज्यादा दिया. I was just casually thinking कि नहीं यार बस डिग्री कर लेते हैं और हो जाएगा, जॉब मिल जाएगा, इस चलेगा. तो मेरा आप सभी लोग हैं जो भी इस एज में है, जो भी परसुइंग कर रहे हैं कॉलेज में डिग्री अपना, तो उनके लिए है कि एजुकेशन को कभी भी लाइटली ना लें. whatever you are learning, studying, उसमें आपका 100% दें उसमें, right? Try to grab whatever is written in the books. वो हमें लगता है कि अरे कहाँ काम आएगा, साइन कॉस थीटा यार कहाँ सुनने को मिलेगा लाइफ में, बट डेफिनेटली इट वर्क्स. कभी ना कभी आपको लाइफ में टकरा जाएगा कि यार वो आपने पढ़ा होगा, तो आप डेफिनेटली कैन कॉम्पीट विद अदर्स. So that's the only advice कि एजुकेशन को लाइटली मत लीजिए. जो मिस्टेक मैंने की वो मिस्टेक मत लीजिए. राइट, जो मिस्टेक मैंने की वो मत कीजिए. Okay, sir. So, is there any story regarding your business or life you want to share with us? Yeah, definitely. Like as I mentioned, the driving force, right? तो वो हर चीज के पीछे ड्राइविंग फोर्स होता है आपका कि आपको ये काम क्यों करना है. करेक्ट. Yeah, so that was not the reason that I had to come back to Gwalior. तो मैंने कंपनी स्टार्ट किया, बट उसके बीच में एक और स्टोरी है बहुत इम्पोर्टेंट. Okay, sir. बेसिकली क्या हुआ था कि मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हुई थी कि किसी रिलेटिव को, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स को ही किसी को अपना लोकेशन चेंज करके ग्वालियर रिलोकेट होना था, ग्वालियर शिफ्ट होना था. आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली ओनली, एनसीआर में अपना आईबीएम में जॉब कर रहा था एट दैट टाइम. तो किसी को ग्वालियर आना था, एंड दैट पीपल हैड कॉल्ड मी अप कि यार भैया देख लो यार थोड़ा सा कुछ वहाँ पे आईबीएम में कुछ हो जाता है तो कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके मेरे को सेट करा दो, इंटरव्यू करा दो, ऐसा टाइप से कॉल आया. तो आई टॉक टू माय मैनेजर एंड टू अदर पीपल, एचआर से बात किया,
उन्होंने कहा रेज्यूमे दे देना, देखते हैं, बात करते हैं. तो आई लाइक ट्राई टू चेज फॉर 2-3 months, बट आई कुड नॉट. मतलब मैं उस समय लाइक 11-12 years का एक्सपीरियंस था मेरा. आई वाज इन अ गुड पोजीशन, लाइक मैनेजर था वहां पे, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू हैव द इंटरव्यू फॉर दैट पीपल, राइट. उस पर्सन का मैं एक इंटरव्यू भी शेड्यूल नहीं करा पाया. सो दैट वाज द पिंच फॉर मी. यार क्या फायदा है, इतने बड़े बन गए, इतना अच्छा पैकेज हो गया, IBM जैसी कंपनी में बैठे हो, बट इवन इफ यू कांट गेट योर किसी नीडी को अगर आप इंटरव्यू भी शेड्यूल नहीं करा पा रहे तो फिर कोई फायदा नहीं आपका, है ना. तो बेकार है लाइफ. While on the other hand, फिर मेरे एक और अंकल थे. He was not literate. He was not like कोई अच्छे इंजीनियरिंग वगैरह नहीं थे. He was having his own business. ठीक है, वो उनका ग्वालियर में बिजनेस था. And he was able to set him up. Like उन्होंने उसको सेटल करा दिया, उनको जॉब दिया अपने बिजनेस में और सेट कराया. तो अंदर से हुआ यार, बड़ा गिल्ट सा फील हुआ कि यार मुझसे तो अच्छे ये हैं जिन्होंने ना कोई इंजीनियरिंग की, ना कहीं जॉब कर रहे हैं, अपने बिजनेस में आज बस इतना पावर है कि जिसको चाहे रख सकते हैं, जिसको चाहे निकाल सकते हैं. एक मैं हूँ यार, अच्छा सैलरी हो गया, बढ़िया सिटी में बैठा हूँ, IT कंपनी में हूँ, बट आई कांट डू एनीथिंग. तो वो दैट वाज द लाइक मेजर इम्पैक्ट ऑन माय माइंड एट दैट टाइम. आई रियली डिसाइडेड कि नहीं भैया, अब तो बिजनेस करना है और अब तो अपने को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है. सो दैट वाज द रीजन कि आई स्टार्टेड दिस थिंग इन ग्वालियर, सो दैट मुझे तो अपना चाहिए था, मुझे तो वापस आना, मतलब मेरा भी प्लान चल ही रहा था वापस आने का, बट दैट गिव मी द किक, जो वो किक मिलना चाहिए ना, ये वो कब करेंगे वो. सोचते तो हम लोग भी रहते हैं यार, एक बार कॉलेज हो जाएगा, फिर पैसा होगा, फिर मैं भी स्टार्टअप करूंगा, अपना ऐप बनाऊंगा, घर वालों समझाया कि रुक जा, कॉलेज कर ले, जॉब कर ले, फिर पैसा आएगा, खूब उड़ाना, राइट, ऐसे बोलते होंगे. तो मैं भी हमेशा किया, चलो देखेंगे, करेंगे, कभी करेंगे. दैट वाज द राइट मोमेंट दैट डेफिनेटली किक मी आउट कि नहीं भाई, अब तो कुछ करना है, और अब तो ऐसा कुछ करना है कि भैया उनको कोई भी आए, वी कुड ऑफर देम अ जॉब, राइट. एटलीस्ट अब जॉब सीकर से आप जॉब गिवर बन जाओ. करेक्ट. जॉब आपको मांगना नहीं पड़ेगी भैया मुझे, क्योंकि मैं जब आना चाह रहा था ग्वालियर में, तो आई वाज ट्राइंग टू रीच सम पीपल कि भैया कोई जॉब मिलेगा डेवलपमेंट में, IT में, कुछ भी. तो आई वाज लुकिंग फॉर दैट. लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ कि यार मेरे क्लोज रिलेटिव को, और आई वाज नॉट एबल टू प्लेस देम एनीवेयर, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, कुछ ऐसा स्टार्टअप करना है, सेटअप करना है कि अपना, जहाँ पे वी कैन जनरेट सम काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उधर उनको जाके करना है. सो दैट्स व्हाई वी सेट इट अप इन ग्वालियर. अदरवाइज मेरा ऑप्शन था, मैं नोएडा, दिल्ली, NCR, बेंगलोर में भी सेटअप खोल सकता था, बट नहीं, कि ग्वालियर में रह के ग्वालियर के लोगों के लिए भी कुछ करना था. ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं थी, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ लेके आनी थी. सो दैट वाज द वन ऑफ द रीजन आई स्टार्टेड दिस कंपनी ओवर हियर. You connected to whom? Like आप चाहे नोएडा में खोल सकते, बट you established that industry in Gwalior itself. करेक्ट. दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि नहीं यार, अपने को ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे भी प्रॉब्लम है. अपॉर्चुनिटी नोएडा में ऑलरेडी आप जाओ, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज आर देयर, राइट. तो वहाँ पे आपको इतना ज्यादा, मतलब क्या ही, मतलब कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. मैं एक नई कंपनी और खोलूंगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा वहाँ पर, बट व्हेन आई एम सेटिंग अप हियर, आई कैन मेक अ डिफरेंस टू द हंड्रेड्स ऑफ लाइफ, राइट. और अभी तक हमारे एटलीस्ट 200+ एम्प्लॉइज रह चुके हैं, मतलब आना जाना जब से स्टार्ट किया. कुछ लोग आए, कोई ने इंटर्नशिप करके निकल गए, कुछ सीख के चले गए. तो आई एम रियली हैप्पी कि यार हमने कई लोगों का करियर बनाया, कई लोग आए, और आज हमारे ऐसे करने के बाद फिर वो TCS, इन्फोसिस, विप्रो ऐसी कंपनी में बैठे हुए हैं. I have heard one story, like there is a shop vendor and you have given them opportunity to learn Python, right? What was that story? Yeah, sir. What was that story? Right. Acha. I think I spoke about it in GDG. I'm not sure. Not in GDG, but I think you have spoke about it in. I don't remember the name of the organization. It's Gurukul. Yeah. Ah, right. Yeah. So yeah, people want to know about that. So could you please light it that? Yeah. So जैसे मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. So one day आपके जैसे लाइक एक लड़का टाइप आया था. He was not like he belongs to a very poor family. He was like a vegetable, like वो शॉप का अपना करता था टाइप से, अपना सुबह वेजिटेबल लाके और अपना बेचना टाइप से. एंड ही वाज आल्सो डूइंग अ जॉब इन द मैकडी में वो पार्ट टाइम वहाँ पे भी जॉब करता था. बट ही वाज रियली कीन टू लर्न न्यू थिंग्स. और बोला मैं रात को जाके अपने मैं सीख रहा हूँ, पढ़ता हूँ. मैंने अपना पैसा सेव करके लैपटॉप भी ले लिया है अपना, कोई से पुराना टाइप का. एंड सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हिज लाइक विलिंगनेस एंड उसका जो हार्ड वर्किंग था. सो ही सेड कि कोई भी इंटरव्यू रख लो, जैसे भी करना है आप मुझसे पूछ के देख लो. एंड आई थॉट
तो मैंने इसको सिंपल सा एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, एक कोड लिखने को। मैंने कहा ठीक है, फॉरगेट अबाउट द कंप्यूटर, सिर्फ मुझे इसका अप्रोच बता दोगे, सो आई नो कि हाँ यू आर विलिंग टू लर्न न्यू थिंग। सो ही सेड कि सर मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं आपका एक जॉब छोड़ दूंगा, मैं थोड़ा पार्ट टाइम वहां पे करके और यहाँ पे सीख लूंगा, आप सर पैसा वैसा जो भी देना वो देख लेंगे, सीखने के बाद स्टार्ट कर लेना। सो आई वाज रियली इम्प्रेस द जिस वो क्या कहना चाहिए ना, बिल्कुल जो कहते हैं दिल से चाहना होता है कि लाइक दिल से ही वाज लाइक कि बस मुझे सीखना है। ही वाज इन दैट फीलिंग कि मैं सर कितने घंटे बोलोगे काम कर लूंगा, आप जो टाइम बोलोगे मैं आ जाऊंगा, मैं अभी सैलरी भी नहीं चाहिए, बस मेरे को तो सीखना है। सो या डेफिनेटली, तो ही वाज सेड कि देखिए मैं मैगडी वाला जॉब छोड़ दूंगा, सुबह से सब्जी बेच के मैं आपको 12 बजे तक आ जाया करूंगा एंड आई कैन लर्न। तो ही वाज पाइथन में उसने एक दो मुझे को करके दिखाया और वी गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड यू वोंट बिलीव लाइक उसको आफ्टर 15-20 days ही वाज सो स्किल्ड इन द पाइथन, मतलब उसने इतना अच्छे से सीख लिया उसने जेंगो अपना कि हमने उसको पहला प्रोजेक्ट भी असाइन किया। पहला प्रोजेक्ट असाइन करने के बाद ही उसका सैलरी भी विद इन फर्स्ट मंथ ही स्टार्टेड हिज सैलरी, और वो उसने अराउंड 7 to 8 months ही डिड अ जॉब एंड आफ्टर दैट ही ट्राइड इन सम अदर कंपनी। उसका सर थोड़ा सा एस्पायरेंट था और उसको भी लग रहा था कि सर मुझे इसमें से काम नहीं चलेगा, आगे भी जाना है। एंड आई वाज आल्सो हैप्पी कि उसने बताया कि जब मेरा सर इन्फोसिस में हो गया है, राइट, सो आई वाज रियली हैप्पी कि यार वाह यार, आज तुम्हारा हार्डवर्क जो है वो मतलब रंग लेके आया कि यू डेफिनेटली व्हाटएवर यू वांटेड टू अचीव यू आर लाइक ऑन दैट प्लेस नाउ। तो अभी भी मिलता है और ही से सर वो सर बहुत अच्छा रहा मेरा लर्निंग और जर्नी सीखने का, और बिकॉज ऑफ यू आई एम सिटिंग इन द। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं था यार, तेरा ही हार्डवर्क है, यू वांटेड टू लर्न, यू वांटेड टू अचीव समथिंग, बट यू गिवन द प्लेटफॉर्म, राइट? बस मैं तो क्या, मतलब जैसे 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, मेरे लिए यू आर जस्ट अनदर गाय, बट इट वाज योर ओन स्किल्स, योर ओन एफर्ट व्हिच मेड यू टू दैट पोजीशन कि आपने वो अचीव किया एंड यू वर देयर। सो दैट्स अ रियली इंस्पायरिंग स्टोरी। मैं इसको कई बार मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए सुनाता रहता हूँ कि यार ये सब बहाने होते हैं कि मेरा कॉलेज खराब था, सर मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरा पापा मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहे एंड ऑल। So these are the just excuses not to do anything. If you really want to do or really want to achieve something, nobody can hold you, nobody can stop you, right? It's always up to you कि आप उसको किस लेवल तक जाते हैं to fulfill your dream, fulfill your desires, और आप उसको कैसा करते हैं। So that was really like मेरे लिए भी वो एक inspiring और motivational है कि हाँ यार मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही था यार कि क्या करना है, मिल जाएगा, कुछ कर लेंगे। But I really success. correct. Yes. So yeah. So that was a really inspiring story, like from my life का सबसे inspiring moment है कि इस कंपनी का मुझे लगा कि चलो यार जो पर्पस था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, like I'm succeeded. अगर एक लाइफ भी बना ली मैंने तो लगूंगा ठीक है चलो यार अपना पर्पस पूरा हुआ लाइफ का। Yes, sir. Nowadays you are making thousands of lives, giving them opportunities to work. Correct. So favorite childhood memory? We haven't talked about your childhood. How was your childhood? See, everyone has to go back again. कभी-कभी हमें भी याद आता है कि यार वापस से वही टाइम आ गया। Yeah, one of the like funny moment I would recall from the past, from my childhood. एक बार घर से कुछ मम्मी ने वो सब्जी लाने के लिए कुछ पैसे दिए, 2-3 रुपए उस टाइम पे, मतलब 5 रुपए कुछ दिए थे कि लेके आना है मार्केट से टमाटर जो भी है। तो आई वाज गोइंग टू द मार्केट, तो बीच में वो होता है कुछ, आपने पता नहीं आजकल तो जाने पर खेल दिखाते हैं सांप और नेवले का, तो कुछ चल रहा होता है, भीड़ लाके गोल गोल बैठ जाते हैं सब लोग। सो आई वाज टक ओवर देयर कि मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ क्या चल रहा है। सो इनिशियली दे हैव सम काइंड ऑफ मैजिक, कुछ वो मैजिक वैजिक करके दिखाते हैं। सो आई वाज लाइक गेटिंग इंटरेस्टेड, वाओ यार सही है, मजा आ रहा है करके। एंड लास्ट में दे कुछ उन्होंने ऐसा स्टोरी बनाया कि आपके पास जो भी पैसा है वो इसमें डाल दो, जो भी है वो निकाल दो। सो आई हैड दैट 5 rupees in my pocket to buy some vegetables and मैं उतना डर गया, उन्होंने ऐसा, आई वाज लाइक जस्ट 7 or 8 years old, 9 years। वो जो स्टोरी उन्होंने बताया कि नहीं जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, अभी जीप से खून निकलेगा और ऐसा, उन्होंने स्टोरी बना के डरा दिया मेरे को कि आई पुट माई ऑल द मनी इनटू दैट हिज बॉक्स। अभी तो 1.5 घंटा में वैसे ही लेट हो गया उनका प्रोग्राम देख के, शो देख के, और ऊपर से पैसा भी दे दिया। एंड आई केम बैक एट होम, मम्मी ने पूछा कहाँ है सब्जी, मैंने कहा वो पैसे तो मैंने उसको दे दिया। फिर जो तार कुछ पड़े उसमें, so it was like oh my god,
उन्होंने समझाया इट्स लाइक ऑल सुपरस्टिशियस, लाइक इट्स अंधविश्वास, इन सब में नहीं पढ़ना है। हाँ, तो दैट वाज अ लाइफ लेसन था कि इन सब में ये सब मतलब नहीं पढ़ना है, आगे से ध्यान रखना है। ये सब चीजें जो है ज्यादा स्कैम तो नहीं उस टाइप का, बट ये कहेंगे कि ये सब कुछ नहीं है, राइट। ज्यादा अंधविश्वास और इन सब चीजों में बिल्कुल दूर रहना है, अपना काम से काम रखो। इन सब ये आलतू फालतू लोग या इस टाइप से टोना मंत्र, ये जादू, इन सब से थोड़ा सा दूर रहना है आपको। तो दैट वाज अ लाइफ लेसन। बहुत है सर, लाइक मेनी पीपल्स बिलीव इन दीस सुपरस्टिशियस थिंग्स। करेक्ट। So yeah, so that was the funny also at the same time, but it was a learning moment कि मतलब उसमें पढ़े तो थे, 2-4 याद है अभी भी but ये सब्जी नहीं ला पाया और 1.5 घंटा लेट हुआ। But yeah, so I would advise कि अगर ऐसा कुछ भी है, आजकल थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया है, आजकल ऑनलाइन वर्चुअल स्कैम्स होने लगे हैं आजकल इतने सारे, तो इट्स लाइक जस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया है the same way. So people, you should be like extra conscious while doing any online transactions, online social media postings, और इन सब में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बाकी यही है, चाइल्डहुड में बड़ा मजेदार था, बाकी सभी का अच्छा होता है, नानी का घर, बच्चों के दोस्त, गर्मियों की छुट्टियां, और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स होते हैं। Okay, sir. So like, I want you to give some success mantras to our audience. सक्सेस का सक्सेस का सच मेरे हिसाब से मतलब व्हाट आई फील इज लाइक देयर इज नो थंब रूल, राइट, व्हिच आई कैन गिव इट टू एनीवन। लाइक ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाहता, बट देयर इज नो थंब रूल फॉर द एनी सक्सेस, राइट। इट ऑलवेज कम्स लर्न लाइक बाय डूइंग। आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जितना ज्यादा ट्राई एंड हिट एंड ट्राई करते हो, सो डेफिनेटली यू रीच समवेयर, यू अचीव समथिंग, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए चला या मेरे बिजनेस में चला या मेरे स्टडी के टाइम पे चला, द सेम विल वर्क फॉर यू और सम अदर गाय, राइट। आपका जो कंडीशंस हो सकता है, सर्कमस्टांसेस हैं, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर पीयर, योर फ्रेंड्स, योर कॉलेज, योर एकेडमिक्स, एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर देयर, फैक्टर्स आर देयर which impact your current and future life, right? So what you do is like, जो भी आपको करना है ना, दिल से आवाज आ रही है वो करना चाहिए, राइट। दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, कई बार हम क्या सोचते रहते हैं, हमें सिखाया जाता है कि यार नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, हमें लाइक सोच समझ के करना चाहिए कोई काम। तो कई लोग क्या सोचते ही रह जाते हैं। वो आज मेरे टाइम पे भी कई लोग हैं जो कॉलेज में या कंपनीज में पहले जॉब करते थे, दे ऑलवेज से यार हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट दे ऑलवेज थिंकिंग दिस इज नॉट अ राइट टाइम, हम इतना पैसा लगाएंगे तो मुझे इतना मिलना चाहिए। सो दे आर ऑलवेज इन द कैलकुलेशंस। सो डोंट कैलकुलेट टू मच, इट्स गुड टू हैव आइडिया, बट डोंट उतना ज्यादा टाइम ओवर थिंकिंग नहीं करना है, उतना टाइम स्पेंड नहीं करना उसमें। इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग, ऐसा सोचो कि उससे यार दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, राइट। अगर आपके मन में आया कि यार ये ट्राई करके देखना है, मुझे वहां जाना है, ठीक है, एक बार गए, मजा नहीं आया, दैट्स ओके, चलो अच्छा नहीं लगा यार, ऐसा नहीं कि उससे लाइफ खत्म हो गया, 2 दिन बाद आप वापस अपने घर पे, आप भी वहीं की वहीं हो। सो इट नथिंग इज गोइंग टू हार्म यू, राइट। सो यू शुड ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। मेरा एक ही मंत्र है कि जो भी करना है करके देखो, राइट। कभी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करो। मैं बोलूंगा कि नहीं यार, ग्वालियर में आईटी कंपनी मत खोलना, चलता नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं मिलते, क्लाइंट नहीं मिलते, यू विल मेक दैट परसेप्शंस, राइट। आप भी सोचो ठीक है, ये भी फेल हुए, मैं भी ट्राई करता हूँ, लेट्स से क्यों नहीं मिलते, मुझे भी तो पता चलेगा, हो सकता है गौरव तो झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो यू शुड ऑलवेज give it a try, whatever comes into your mind. If you're trying something new things, correct. If you feel that you can do something, definitely you can achieve something, right? You are just limited by what you are thinking of, correct. तो आपको जो है सभी के सक्सेस मंत्र एक ही है कि परसेप्शंस ना बनाए, बिना कुछ करे या दूसरों की बातों से सुन के ही अपने आप को लिमिट ना करें, राइट। इट्स गुड टू नो अबाउट द फैक्ट्स, बट उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, या किसी ने बोल दिया कि ऐसा काम नहीं करता है या ये काम करता है, अभी मार्क जकरबर्ग बोले कि नहीं आप भी बिलियनियर बन सकते हो, राइट। तो हम ऐसा नहीं किया, उसने बोल दिया आप सभी लोग बिलियनियर बन जाएंगे, सभी मार्क जकरबर्ग बन जाएंगे, नहीं। यू हैव टू डू योर ओन स्टोरी, राइट। आपको अपना पाथ फॉलो करना है, आपको अपना जो भी है वो करना पड़ेगा, डेफिनेटली यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट। तो यही सक्सेस मंत्र है, बस ट्राई एंड ट्राई। Okay, sir. So it's really amazing session with you. We have learned a lot of new things from you, and our audience has learned a lot from you. So thank you so much for giving your time. So now we are ending this podcast. So thank you so much, sir. All right, yeah, awesome. Right.
Hi, Manish. Thank you. Hi, thank you, Gaurav, for giving your time to us. It's really glad to listen you. I was listening your whole podcast, and I must say it was really very good. Like I was engaged totally for by listening your voice and your talks, and especially your childhood memory. Yeah, it was really awesome. Thank you so much for giving your time. Thank you. Same here. Like this is my first experience to be have this kind of conversation. So yeah, I'm also equally excited and amazed to be on this platform and interacting you guys.